Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will see about the reproductive system of fishes. It is a part 1 and this is very important for your ICAR Fisheries PG exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request, if you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. So first we will see the reproductive system. So in reproductive system, fishes, in order to maintain their races and in nature, they must reproduce in order to grow their population. There are bisexual, hermaphrodite, parthenogenetic and heterosexual, and these are the 4 different types of monosexuals. So the gametes or the reproductive organs are known as gonads, which are testes and ovaries, which make up the majority of reproductive system, and they produces sperm and ova. So sperm is from testes and the ova is from ovary. Next is, except in some species of Serenidae and Sepridae, which are the true hermaphrodites. So true hermaphrodites are species from the Serenidae and Sepridae family, and where the eggs and sperms develop in a same gonad and self-fertilization occur. But occasionally the hermaphrodite gonads can also be seen in other species like the Poecilia formata, which exhibit parthenogenetic development, in which the sperm merely stimulate the growth of egg without participating in the fertilization. So sperm जो है हमारा वो merely हमारी growth में help करता है egg की, and it does not participate in the fertilization. Next is sexual dimorphism. So sexual dimorphism is of 2 types. In certain species it is well exhibited. So it can be a structural characteristic that is specifically relevant to ova fertilization, which is present in sharks. So sexual dimorphism जो हमारा पार्ट है शार्क्स में वो होता है क्लेस्पर, which is used by the males for as a capillary organ for entering the milk into the female body. सो फीमेल बॉडी में मिल्क को एंटर करने के लिए हमारा एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है शार्क्स में, विच इज़ कॉल्ड एज क्लैस्पर, एंड it is used by the males. Other species have anatomical quirks that have nothing to do with the mating or reproduction but are related to the courtship and conflict between the competing males. So other जो anatomical organs present होते हैं males में, वो mating के लिए या reproduction के लिए useful नहीं होते हैं, वो होते हैं useful हमारी courtship और जो हमारा competition होता है between the 2 males or the other males for inducing the milk in the female. So जब ये प्रोसेस होती है तब ये जो हमारे एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम टीलियोस्ट एंड इलास्मो ब्रांच. मोस्ट ऑफ द फिश अंडरग्रो एक्सटर्नल इन वाटर फर्टिलाइजेशन. सो काफ़ी सारी फिशेस हैं एक्सेप्ट सम टीलियोस्ट एंड इलास्मो ब्रांच जो कि हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में. In Condiactis, the male are given a clasper or a micropatria to transmit the sperm into the female body. As like in a shark, there is a clasper. So in a Condiactis, males also do have a clasper, which is used to transmit the sperm into a female body after the egg have been fertilized inside the फीमेल बॉडी. सो इसके थ्रू हमारे जो मेल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म को फीमेल बॉडी में, एंड देन द फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल बॉडी ऑकर्स. नेक्स्ट वी विल सी द सिलोमिक एपिथेलियम इज़ अ प्रिकर्सर इन टू द गोनाइड्स. सो सिलोमिक एपिथेलियम जो होता है वो प्रिकर्सर की तरह काम करता है गोनाइड्स में. एज एन इलास्मोब्रांच, डिप्नोई, क्रॉस्टीनी, क्रोनोस्ट्राई एंड एमिया, the ovaries may be exposed, then this is called a gymno-ovarian, and here the ova are released into a coelomic cavity and exit through a Mullerian duct anteriorly located in oviductile funnel. So जो हमारी कॉन्डियास्टाई होती हैं या एमिया काल्वा जो होती है हमारी फिशेस टिप्नोई, ये जो होती हैं ये जिम्नो ओवरियन होती हैं, जो कि ओवा होता है वो एक्सपोज होता है. ओवरी जो होती है हमारी पूरी तरह से एक्सपोज होती है, उसके ऊपर कोई भी एक लेयर या फिर कुछ ऐसी सिलोमिक सैक्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जिम्नो ओवरियन कंडीशन कहते हैं, जिसमें कि जो एग होता है वो डायरेक्टली रिलीज होता है सिलोमिक कैविटी में और
एग्जिट कर जाता है मिलियन डक्ट से, जबकि इन लेपिडोसाइटस एंड अदर टीलियोस जो होती हैं ओवरियन limnan continues into a oviduct and ovaries are encased in a coelomic sac. So here the coelomic sac is present in teleos and lepidocytes, and this is called as cytovarian, cyst ovarian or cytovarian कंडीशन होती है ये। तो आपको कभी कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जिम्नो ओवरियन और साइटो ओवरियन में क्या डिफरेंस है। तो जिम्नो ओवरियन आर द एक्सपोज्ड ओवरी जब होती है तो हमारी जिम्नो ओवरियन होती है, जबकि जब हमारी सुलमिक सैक से कवर्ड होती है तो साइटो ओवरियन होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज Galacidae and Salmonidae teleos respectively as oviduct in Hyodontidae and Notopidae and Osteoglossidae partially or totally degenerate. So जो हमारी ओविडक्ट होती है इन सारी फैमिलीज़ में हमारी टोटली या फिर पार्शली डिजनरेट हो जाती है, और जो ओवा शेड होते हैं वो होते हैं हमारी सिलोमिक कैविटी में और एग्जिट कर जाते हैं थ्रू द पोर्स। बोथ मेल एंड फीमेल gonodacts of Angulidie, which is eels, deteriorate and lose all the connection to the gonads. So gonodacts जो होती हैं वो deteriorates हो जाती हैं और gonads से उनकी कनेक्शन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इन द मेल एंड फीमेल ऑफ द Angulidie, which are the eels. Next we will see about the male reproductive organs. So these are the testicles, which are a flattened and lengthy organ found on the either side ventral to the kidney in the back of the abdominal cavity. So जो हमारी testicles होती हैं male reproductive organ in the fishes, they are generally flattened और lengthy organ होती हैं जो कि found होती हैं हमारी ventral side of kidney में, abdominal cavity में, back of the abdominal cavity, and it is only anatomical feature which distinguishes between the male fish and the female fish. So testes are still connected to the body wall and air bladder. It's possible that they have a different size. So ये जो होती हैं हमारी testes जो होती हैं वो mainly body wall और air bladder से connected होती हैं। जब आप इसका dissection करेंगे तब आप देखेंगे कि ये testes जो होती हैं वो air bladder से काफ़ी ज़्यादा connected होती हैं और ये different होती हैं sizes में। The urinogenital papilla is opening through which the two sperm ducts unite posteriorly. Indentation at the testicular edge are possible, and these indentations may become more noticeable during breeding season. So indentations क्या होती हैं कि ये साइजेस में डिफरेंस जो होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेंगे ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे। जो हमारा यूरिनोजेनिटल पेप्लिया होते हैं ये दो ओपनिंग्स होती हैं थ्रू विच द स्पर्म डक्ट आर कनेक्टेड। ओके गाइस, next just a few species like Mr. Singhala tortor have the functioning anterior 3/4 of each testes and sterile posterior 1/4. So जो मिस्टर सिंघाला है और टॉर है उसमें क्या होता है कि जो 3/4 होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस जो होती हैं वो हमारी फंक्शनिंग होती है, जबकि स्टेराइल होती हैं द रिमेनिंग 1/4 So in these species, the posterior portion of testes is physically and functionally distinct from the anterior portion. So, posterior portion जो होता है वो physically distinct होता है from the anterior and the interior portion से. The front and the middle region of testes contain different phases of germ cells that are responsible for producing the sperms, but the posterior region is made up of sterile empty lamella and likely function as a sperm storage area during the mating season. In few species the entire testis is useful for producing the sperm. So क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्रंट और मिडल पार्ट होता है वही खाली फंक्शनल होता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म जिसमें कि जर्म सेल्स के डिफरेंट फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होता है यानी कि हमारा जो पिछला पार्ट होता है टेस्टिस का वो जनरली स्टरलाइल होता है और वहाँ पे एम्प्टी लेमेलाज प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ स्टोरेज ऑफ स्पर्म काम करते हैं, जहाँ पे ओनली स्पर्म स्टोर होता है। बट कुछ फिशेस में ऐसा भी होता है कि जो टेस्टिस है वो पूरी एंटायरली जो फंक्शनल है एंड प्रोड्यूस करती है हमारी स्पर्म। सर्टेन टीलियोस सच एज Clarius, Batrachus and Heteropenetrus fossilis have paired glandular structure called as seminal vesicles as outgrowth of hinder ends of vasa differentia.
Next, however, the posterior portion of testes is glandular in certain species like Rita rita and Mistress vitatus. Since they are secretory in nature, the seminal vesicle undergo periodic alteration that's corresponding to testicular cycle. Although the purpose of fluid secreted by seminal vesicle is unknown, it has been postulated that the fluid may aid to nourish and maintain the sperm in an active but viable state. सो जो सेमिनल वेसिकल का जो हमारा फ्लूइड सिक्रेट होता है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अननोन है, बट ऐसा कहा जाता है कि जो फ्लूइड उससे पॉस्टुलेट कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जो फ्लूइड है वो नरिश करता है और मेंटेन करता है स्पर्म की एक्टिविटी को, एंड दे हेल्प इन द वाइबिलिटी ऑल्सो फॉर द स्पर्म. नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी क्या है? ओवरीज. द ओवरीज आर टू लॉन्ग सैक लाइक ऑर्गन दैट आर लोकेटेड वेंट्रल टू द किडनी इन एब्डोमिनल कैविटी. जस्ट लाइक द टेस्टिस, दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द वेंट्रल पोर्शन टू द किडनी in the abdominal cavity. The meso-ovarian serves as their mechanism of the attachment to the body wall. So meso-ovarium जो होता है वो सर्व करता है अटैचमेंट ओवरी की बॉडी वॉल से. द कॉर्डल एंड ऑफ द टू ओवरीज में फ्यूजेस टुगेदर इवन व्हेन देयर एंटीरियर एंड्स आर सेपरेट. सो जो कॉर्डल एंड होता है यानी कि पोस्टीरियर एंड होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जबकि जो हमारे एंटीरियर एंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं. ईच ओवरी हैज़ अ शॉर्ट ओविडक्ट दैट कंटिन्यूज द हिंड एंड पोस्टीरियरली. द टू ओविडक्ट मर्ज एंड कैन either open to the outside through a unique genital aperture or through a single urogenital. Although both ovaries sizes are often equal, this is not always in all the cases. So ovary का जो size है often equal होता है, but कुछ cases में it can be different. When they are immature, they are thin, fleshed and translucent. However, as they mature, they grow larger and lobulate with the ripe eggs protruding from them. सो जब वो इमेच्योर होती हैं तो वो थिन और फ्लैशड होती हैं और ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइटिश कलर में होती है, जबकि जब वो लॉन्गर मैच्योर होती हैं तो वो लार्जर हो जाती हैं और लोब्यूलेटेड हो जाती हैं और उसमें से एग्स जो होते हैं वो प्रोट्रूड होते हैं. द ओवरी वॉल्स is relatively thick during not breeding season, whereas very thin and very highly vascular during spawning season. So जो हमारी ओवरी की वॉल है वो काफ़ी थिक होती है ड्यूरिंग द नॉन ब्रीडिंग सीजन, यानी कि जब एग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं या फिर मेच्योरिंग फेज में होते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है ओवरी वॉल. वेयरएज जब हमारे स्पॉनिंग सीजन आता है या फिर एग्स जो हमारे मेच्योर होने लगते हैं तब जो ओवरी वॉल होती है वो थिन और हाईली वेस्कुलर हो जाती है. Next is there are three layers. Outermost thin is peritoneum. The middle one is tunica albuginea, which is made up of connective tissues, muscle fibers, blood vessels, and innermost is germinal epithelium, which projects as a lamellae into a ovacile. The oocytes that are visible in various stages of development are developed within these ovigerous lamellae. The oogonia, also known as germ cells, are believed to have their origin in germ epithelium. So germ epithelium में हमारे क्या develop होते हैं? हमारे oogonia, which is also called as germ cells, and form a cluster to the lamellae. The chromophobic coating of zooplasm and large nucleus are also features of oogoniums to develop into mature ovum. Each oogonium goes through a number of stages of maturity. The ovary may be in the one or more of these phases at any given time. As oogonium increases in size, there increases in the quantity of ooplasm, which is stained with the basic diet. सो जैसे जैसे ओवरी हमारी डिफरेंट फेजेस में जाती रहती है वैसे ही oogoneum का साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता रहता है और बढ़ता रहता है, और इसी तरह क्वांटिटी ऑफ ओप्लाज्म भी हमारी बढ़ती रहती है जो कि बेसिक डाइस से हम स्टेन कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. डू सब्सक्राइब for next part and don't forget to like, share and comment on my videos. You can also follow me on Instagram for more topics or more notes related to fisheries exam. Thanks for watching guys.